सो गाइस, हम पेपर कर रहे हैं मई जून 2021 वेरिएंस 22। इस पेपर में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने ब्लैक या डार्क ब्लू पेन यूज करना है, और अगर कोई डायग्राम आपने बनानी है, डायग्राम का मतलब डायग्राम नॉट ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स एंड ग्राफ्स, तो वो HB पेंसिल से बनेंगे। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आपने मेंटेन करनी है, ठीक है। कोई भी करेक्शन फ्लूइड यूज नहीं करना, कोई भी इरेजेबल पेन यूज नहीं करना, और डेटा बुकलेट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पीरियोडिक टेबल मिलेगा। और ये भी याद रखिए, इनिशियल क्लासेस में मैंने बता दिया था आपको कि जो डेटा रिक्वायर्ड होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। A group 2 metal combines with bromine to form a crystalline solid, MbR2. Excess aqueous silver nitrate is added to a solution of MbR2 and a precipitate's formed. The mixture is filtered, the precipitate is dried, and the mass of the precipitate is recorded. Part A. State the formula and color of the precipitate. Obviously, whenever silver nitrate reacts with bromide ions, always silver bromide is formed. तो फॉर्मूला क्या रहे, AgBr लिखा जाएगा, एंड द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, तो आप जानते हैं AgBr क्रीमी प्रेसिपिटेट्स होते हैं। Complete the equation to represent the reaction between MbR2 and silver nitrate. Now, silver ions and bromide ions combine together to give silver bromide, and obviously 2 bromine है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 अप्लाई करूंगा। 2 सिल्वर हो गया तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा। This metal M and nitrate combine together to give metal nitrate, which is MnO3 taken 2। सर हमें कैसे पता चला यहाँ पर taken 2 आएगा? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब ब्रोमीन 2 था तो यहाँ पर नाइट्रेट भी 2 होगा। A 0.25 grams sample of pure MbR2 contain this much moles of MbR2. Calculate the relative formula mass of MbR2. Use this to identify M. Show your working. 3 marks का part है, तो obviously 3 points की calculation होगी, यानी 3 steps होंगे। तो हम सबसे पहले MR calculate कर लेते हैं यहाँ से MbR2 का। हमें मास गिवन है 0.250, हमें मोल्स गिवन है, हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास MR आ जाएगा। तो हमारे पास MR है 0.25 डिवाइडेड बाय 8.415 exponent -3 exponent -4, so it's going to be 297.1। 08 आया, मैं 08 लिख लेता हूँ, ठीक है। आप जानते हैं AR ऑफ ब्रोमीन जो है वो 79.9 है। वी हैव 2 ब्रोमीन, इंटू 2 करूंगा तो ये हो जाएंगे 79.9। into 2 is going to be 159.8। So what we can do is कि हम इस टोटल MR में से ब्रोमीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास M का AR आ जाएगा। तो हम AR ऑफ M डिटरमिन कर लेते हैं। तो 297.08 minus 159.8, so ये हो जाएगा आपके पास 297 ×
297.08 minus 159.8, so 137.28. तो MR आपके पास है 297.08 और मेटल M जो है वो 137 AR शो कर रहा है, एंड 137 AR आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे आपको बेरियम का मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिए, बेरियम का होगा। इसके बाद वो कह रहे हैं a sample of MbR2 is dissolved in water, chlorine gas is then bubbled into the solution. Okay, describe the observation for this reaction. आप जानते हैं क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन ब्रोमाइड को डिस्प्लेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, और जब ब्रोमीन बनेगा तो जाहिर सी बात है जो उसका रेड ब्राउन कलर है वो ऑब्जर्व होगा। ये भी तो हो सकता है कि क्लोरीन गैस का येलोइश ग्रीन कलर होता है, वो कलरलेस हो जाए। Name the type of reaction that occurs when MbR2 reacts with chlorine gas. आप जानते हैं क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो ब्रोमाइड को डिस्प्लेस करेगा, which is why it is called displacement reaction. आप इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। Compound Y is a pure insoluble solid which contains halides. A single reagent is added directly to compound Y to determine the halides present. He said single reagent. Identify the reagent added. State the observation which would confirm that Y contains bromide ions. तो अगर आपने ब्रोमाइड आइंस को टेस्ट करना हो तो आप सिंगल रिएजेंट यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सर हम यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी टेस्ट कर आ रहे हैं पहले। ठीक है, और वो सिंगल रिएजेंट भी नहीं है, उसमें डाइल्यूट HNO3 भी ऐड होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू ब्रोमीन। तो जब ब्रोमीन बनेगी तो कलर ऑब्जर्वेशन क्या होगी? रेड ब्राउन वेपर्स is given off. फिर वो कह रहे हैं आपसे separate 1 gram sample of 3 different magnesium salts are tested in order to identify the anions present in each sample. Explain how the action of heat is used to identify which sample is magnesium carbonate. तो बेटा आप जानते हैं कि जब आप magnesium carbonate को डिकम्पोज करेंगे तो obviously मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी तो ऑब्वियसली वो मास लूज कर देगा। तो आप यहां पर लिखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट will decompose so loss of mass takes place, और लॉस ऑफ मास क्यों होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और आप जानते हैं कि आपने यहाँ पर 1 ग्राम सैंपल लिया है, तो ऑब्वियसली जब लॉस ऑफ मास होगा तो उसकी वजह से मास जो है वो 1 ग्राम से कम होगा। Must be lower than 1.
उसके बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट when decomposed so dark brown gas is given off. Also due to loss of mass. Value should be less than 1. इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टेबल टू हीट होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता. Stable to heat, so no reaction. Complete the electronic configuration of the magnesium cation present in these salts. इन तमाम salts में magnesium के ऊपर 2+ चार्ज है. इसका मतलब मुझे magnesium 2+ की electronic configuration लिखनी है. It's quite easy. 1s2, 2s2, and then 2p6. इसके बाद वो कह रहे हैं आपसे a sample of magnesium carbonate is distinguished from a sample of magnesium hydroxide by adding a small amount of each solid to HCl. State one similarity and one difference in these two reactions. Magnesium carbonate जब HCl से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, राइट? ठीक है. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब HCl से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करेगा. ये भी सॉलिड है आपके पास, ये भी सॉलिड है आपके पास. जब ये दोनों सॉलिड HCl से रिएक्शन करेंगे, दोनों सॉलिड्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे. तो ये सिमिलैरिटी है कि सॉलिड्स विल डिसअपियर. एंड ऑब्वियसली डिफरेंस ये होगा कि जब ये कंपाउंड HCl से रिएक्शन करेगा तो एफिवेसेंस रिलीज होंगी कार्बन डाइऑक्साइड की. ये कंपाउंड जब रिएक्शन करेगा तो एफिवेसेंस रिलीज नहीं होगी. तो आप यहाँ लिख सकते हैं effervescence is given off when magnesium carbonate reacts with HCl. ठीक है बेटा. No effervescence with magnesium hydroxide. Next question is, the strength of interaction between particles determines whether the substance is a solid, liquid, or gas at room temperature. Lithium sulfide is a crystalline solid with a melting point of 938 degrees Celsius. It conducts electricity when it is molten with the formulae of the particles present in solid lithium sulfide. Molten, तो जाहिर सी बात है जब molten है तो lithium ions and sulfide ions. Explain in terms of the structure of the crystalline solid. Explain why lithium sulfide has a higher melting point. तो आप बताइए. लिथियम सल्फाइड में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा,
has a strong ionic bond due to strong electrostatic attraction between oppositely charged ions. उसके बाद वो कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड is a gas at room temperature and pressure. It contains a coordinate bond. Explain what is mean by coordinate covalent bond. तो बेटा आपको बताया था coordinate covalent bond में lone pair जो है वो एक ही element provide करता है, and as a result sharing of electron takes place. If you remember these 2 points, an element donate its lone pair so that equal sharing of electron takes place. Draw a dot and cross diagram to show the arrangement of outer electrons in CO. Show the electrons belonging to carbon atom as X. Show the electrons belonging to oxygen atom as dot. ये कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4. This one is 5 and this one is 6. And that's how you can show the electrons. Nitrogen is also a gas at room temperature and pressure. Neither carbon monoxide nor nitrogen is an ideal gas. State 2 assumptions that are made about the behavior of particles in an ideal gas. वैसे तो assumptions मैंने बहुत सारे लिखवाए थे, but याद करें मैंने कहा था कि भाई 2 assumptions बहुत important हैं और वो examiner's favorite है, मैं वही दोनों लिखूंगा. There is no attractive and repulsive forces between the gaseous molecule. Our second assumption थी volume of gas is negligible as compared to the total volume of the container. Explain why nitrogen does not behave as an ideal gas at very high pressure. आप जानते हैं कि जब प्रेशर हाई होता है तो गैसियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड होता है. जब गैसियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड होंगे तो स्पेस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, molecules experiences attractive forces, volume is no longer negligible, and obviously gas will deviate from its ideal behavior. तो आप यहाँ लिखिए at high pressure gaseous molecules are compressed
Molecules comes close together. Which is why molecule experiences attractive forces. And also, volume is no longer negligible. Now the next is complete the table by naming all the types of intermolecular forces in separate samples of nitrogen and carbon monoxide. Intermolecular forces in nitrogen, क्योंकि ये नॉन पोलर है इसलिए इसमें temporary induced dipoles forces होंगी, and induced dipoles forces. And since oxygen is more electronegative element, तो इसमें permanent dipole forces होंगी. So permanent dipole forces. Suggest why the bond in carbon monoxide molecule contain a dipole moment, because oxygen is more electronegative element than carbon. इसमें एक पॉइंट और भी मैं ऐड करना चाहूंगा, और वो ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड में डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा. ऑल्सो डायपोल मोमेंट cannot cancel out together. They just cannot cancel out. A large excess of 2-bromo 2-methylpropane is added to 0.0010 mole of NaOH, which contains a few drops of naphthalene indicator. A stopwatch is started as soon as the substances are mixed. The time taken for the pink color to disappear is recorded. The experiment is repeated at different temperature, keeping all the concentration and volume of the reagent constant. ठीक है. Temperature increase हो रहा है, तो time taken for pink color to disappear जो है वो decrease हो रहा है. ठीक है. वो कह रहे हैं explain what is mean by the term rate of reaction. तो आप कह सकते हैं change in concentration per unit time. Change in concentration, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दोनों में से किसी एक को कोड कर दीजिए. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. या पर यूनिट सेकंड भी कह सकते हैं. The graph shows the energy distribution of molecule in a sample of 2-bromo 2-methylpropane at 25 degrees Celsius. EA represents the activation energy for the reaction. Label the graph to show the proportion of 2-bromo 2-methyl molecule which have sufficient energy to react. ये है जनाब sufficient energy to react. ये वो proportion of molecule है जिनके पास enough energy है reaction करने के लिए at 25 degrees Celsius. वो कह रहे हैं use the same axis to sketch the distribution of energies of molecule in a sample of 2-bromo 2-methylpropane at 50 degree. तो आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑब्वियसली कर्व जो है वो ड्रॉप होता है और ड्रॉप होकर शिफ्ट होता है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड लाइक दिस. ठीक है. एंड दिस टाइम आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी.
यानी ये सब मिला के हो जाएगा अब आपके पास। तो हाई टेम्परेचर पे प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं, यही बात हमने क्लास में डिस्कस की है। और दिस टाइम प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज दिस मच। ठीक है, state the effect of an increase in temperature on the activation energy। आप जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ कैटलिस्ट से चेंज होती है, टेम्परेचर से चेंज नहीं होती, तो आप लिखेंगे नो चेंज। ओके, सी पार्ट 1, draw the mechanism to show the reaction of 2-bromo-2-methylpropane with hydroxide ions। show the intermediate form in this reaction। guys intermediate का है उसने आपसे, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। include all charges, partial charges, lone pair and curly arrows as appropriate। तो सबसे पहला काम, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, ब्रोमीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं यहां से CBr बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपके पास टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस रिएक्शन करेंगे, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर शो कीजिए, यहां से भी रिएक्शन हो सकता है, यहां से भी रिएक्शन हो सकता है। इफ यू रिमेंबर, ये बनेगा टर्शियरी अल्कोहल, और यहां से ब्रोमाइड आयंस रिलीज हो जाए। ठीक है, देन फिर आपके पास है नेम द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। ऑब्वियसली अल्काइल हैलाइड में जब भी कोई मैकेनिज्म होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और क्योंकि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में हो रहा है, तो आप इसको कैटेगोरिकली SN1 से भी कोट कर सकते हैं। The original experiment is repeated at 25 degrees Celsius with 2-chloro-2-methylpropane instead of 2-bromo-2-methylpropane. All other variables remains constant। Predict the effect of using 2-chloro-2-methylpropane compared to 2-bromo-2-methylpropane on the time taken for the pink color to disappear। Explain your answer। आप जानते हैं कि 2-chloro-2-methyl जब आप यूज करेंगे तो उसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा, और इसमें कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड होगा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, जब कार्बन ब्रोमीन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो जाहिर सी बात है इट विल टेक टाइम टू ब्रेक द बॉन्ड। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर होगा। तो आप बताइए, 2-chloro-2-methylpropane has stronger carbon chlorine bond than carbon bromine bond in 2-bromo-2-methylpropane। So will take more time to break the bond। To break carbon chlorine bond, rate of reaction decreases। Yes, slows down। The table shows the structural formula of 4 compounds A, B, C, and D with molecular formula C4H8। Complete the table by giving the systematic name of A, B, C, and D। इसका नाम है बेटा ब्यूटवनीन,
इसका नाम है बेटा ब्यूट सिस ब्यूटूइन, क्योंकि सिमिलर ग्रुप सेम साइट पर अटैच है। इसमें देखें सिमिलर ग्रुप्स डायगोनली अटैच्ड हो गए, तो ये ट्रांस ब्यूटूइन हो गया। एंड इट इज एक्सट्रीमली इजी, 2-methyl propene या 2-methyl propanine, ये भी लिख सकते हैं आप। टू डैश मिथाइल प्रोपानीन, सिस्टमैटिक नेम दे रहा है तो फिर प्रोपानीन आएगा। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द टर्म स्टेरियोआइसोमेरिज्म। molecules which have the same molecular and structural formula but different arrangement of atoms in space. W is an alkene with formula C4H8. It reacts with HBr to form two possible carbocations, this one and this one. Identify W as compound A, B, C or D. अच्छा, मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं इस एल्कीन के थ्रू आपके साथ कार्बोकैटाइंस बनाऊंगा तो ये बनेगी CH3 CH2 CH प्लस CH2। ये भी तो बन सकता है इसी एल्कीन के थ्रू CH3 CH2 CH CH2 प्लस। तो अब देखें ये दोनों कहाँ लिखे हुए हैं, ये दोनों हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH प्लस CH2, ये लिखा हुआ। ठीक है, फिर ये CH3 CH2 CH2 and then CH2 plus, CH3 CH2 CH2 and CH2 plus। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये कार्बोकैटाइन सिर्फ ब्यूटवनीन से मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं ए। बी से आपको सिर्फ ये वाला कैटाइन मिलेगा CH3 CH प्लस CH CH3। सी से भी सेम यही वाला कैटाइन मिलेगा। डी से ये वाला मिल सकता है CH3 CH3 प्लस CH2। इसके साथ ये भी मिल सकता है CH3 CH3 एंड देन CH2 प्लस। ठीक है, तो ये कैटाइन भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, ये दो अवेलेबल थे, इसका मतलब ए से ही मिलेंगे आपको, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। Draw the skeletal formula of the major organic product formed when HBr reacts with W. Explain why this is a major organic product. तो मार्कोनी कोफ रूल अप्लाई हो रहा है ऑब्वियसली इसके अंदर। तो मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का स्केलेटल फॉर्मूला, यानी जब HBr इससे रिएक्शन करेगा तो इस जगह पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, इस जगह पर H ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन का हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आ गया जनाब 2-ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, अब रीजन क्या है? रीजन है कि सेकेंडरी कार्बोकैटाइन
is more stable than primary carbocation. Due to the positive inductive effect of electron donating alkyl groups. उसके बाद वो कह रहे हैं a sample of propane 1 reacts with concentrated sulfuric acid to form propene. Identify the role of concentrated sulfuric acid in this reaction. तो बेटा आप जानते हैं अल्कोहल से एल्कीन बन रही है तो सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट भी कहते हैं ना इसको, ठीक है। Alcohol Y reacts completely when warm with acidified potassium dichromate 6 to form Z. Z is distilled from the reaction mixture as soon as it is made. Tolerance reagent is added to sample of Z and warm silver mirror is formed. इसका मतलब Z जो है वो tolerance reagent positive show कर रहा है, इसका मतलब ये aldehyde है। Name the type of reaction that occurs when Y reacts to form Z. Oxidation. Identify with a tick the functional groups present in Z. Aldehyde, क्योंकि tolerance test positive आया है। S is a secondary alcohol with a molecular formula this. Draw the displayed formula of S. 1, 2, 3, 4. OH. Secondary alcohol कह रहा था, ये कर दिया हमने। सारे के सारे बॉन्ड्स हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। S is converted to V in a 3-step reaction sequence. अगर ये secondary alcohol है तो obviously ये secondary alkyl halide है। In step 1, the secondary alcohol S reacts with PBr3 to produce T, which has a molecular formula C4H9Br. Give the systematic name of T, तो ये हो जाएगा 2-bromobutane, क्योंकि secondary alkyl halide बनेगा। Name the type of reaction that occurs in step 1. Step 1, जब alcohol से alkyl halide बनता है तो nucleophilic substitution reaction होता है। State the reagents and conditions for step 2. अगर Br की जगह पर आप Cn लेकर आए हैं, इसका मतलब आपने पोटेशियम साइनाइड यूज किया है इन एथेनॉल, तो आपने पोटेशियम साइनाइड यूज किया है एज अ रिएजेंट और आपने इथेनॉल यूज किया है एज अ कंडीशन, यानी सॉल्वेंट है ये आपका। और कंडीशन क्या होती है बेटा इसमें? फ्लक्स। Step 3 involves heating this with dilute acid to form V. Complete the equation for this reaction. मैंने आपको पढ़ा है कि जब साइनाइड हाइड्रोलाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमेशा COH में कन्वर्ट होगा, तो ये बन जाएगा C4H9COH। और मैंने ये भी कहा था आपको कि जब नाइट्रोजन होगा तो वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा। अब प्रॉब्लम है कि अमोनिया जो है वो बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा? अमोनिया माइंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने कितने ऐड किए हैं बेटा? ऑक्सीजन कितने ऐड किए हैं? 2। तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूं। तो अब जरा देखिए यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? 5।
और यहाँ पर 4 + 1 कितने हो जाएंगे 5. That's how we can balance the equation. An unlabeled sample contain either S, T or U. The sample produces the infrared spectrum. Explain how this spectrum confirms that unknown sample contains U. Okay, U क्या है आपके पास? Cyanide, nitrile, और nitrile की जो shift की वैल्यू है वो 2280 सेंटीमीटर इनवर्स होती है. तो CN shows peak between 2250 centimeter inverse to 2280 centimeter inverse. ये रही वो peak U की. ठीक है. We are done with the first paper.